पढ़ी ना पढ़ी न RS पढ़ी जो सर RS Sharma old NCERT is the notes. Though I will give you notes, that's a different thing. When we are in this field, you should be clear about this factor. UPSC IS हवा पे जदि आसचु, there is no other option than reading a basic book. और किसी बात नहीं था. Basic बही पढ़िया को पढ़ियो ता छड़ा किसी बात नहीं. First point. Second point, whoever says, whoever he or she might be, कि more notes enough, then he is a fraud. Notes और से ठीक किसी काम दबनी. एउटा अलग स्टाइल अछि यार कौन करियार ना क्लियर करियार नोट्स काम दबनी ठीक किंतु नोट्स दिया हबो एथि पई कि सो दैट यू कैन रिवाइज एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम बेले किछटा जिंसो रिवाइज करि जु दैट्स इट द थिंग्स विल गेट इंटरलिंक्ड बाय सेइंग दिस लेट मी शो यू मु काली तुम देखै नथली लेट मी यू नो शेयर माय स्क्रीन विथ यू Hope you can see me, huh? Hope you can see me. Yes, sir. yes sir See, this is the Yes, sir. ancient civilization. याको मन रखियो. एटा होची the moment I will say you ancient civilization. Exam hall भितरे तोरो ए मैप टा मन पड़ियार अछि. See the extent. एठी देखे मन रखी जा. See the extent of the Indus Valley. Seeing this is Wang Ho River Valley or Chinese civilization. This is Mesopotamia. Mesopotamia माने ही between the rivers. ताको हमें पर के बेटा करिया just एती मन था. एटा होची Mesopotamia. एटा होची इजिप्ट. मु काली कहितली कोन मेसोपोटामियन रेकॉर्ड जणा पडुची. इन द मेसोपोटामियन रेकॉर्ड जणा पडुची. इंडस वैली सिविलाइजेशन को संगरे मेसोपोटामियंस मानकर ट्रेड रिलेशन थिला. रिपीट द टर्म मेसोपोटामियन रेकॉर्ड्स जणा पडुची. इंडस वैली रेकॉर्ड्स नुह मेसोपोटामियन रेकॉर्ड्स जणा पडुची कि एई मानकर इंडस वैली को सेथे लिखा छी मेलुहा को संगरे ट्रेड रिलेशन अछि. यांकर जो इंडस वैली वालांकर स्क्रिप्ट थिला ना हां ताको स्क्रिप्ट डिसाइफर हेनी तेणु करी से कोन कहउछन हम किछि जानि पारुनु. यांकर स्क्रिप्ट जणा पडला प्रिलिम्स रे भूल हवा नाही. यांकर स्क्रिप्ट जणा पडची मेसोपोटामियंस. एटा होची ओमान. एटा होची यूएई. एठी अछि बहरेन. दिलमुल मकान को देबो एठू बाहरीबे बोट नै की एठी किबे एठी आसी गोटे स्टॉपेज नेबे तापर एठी के आसीबे. That these are called as the intermediary points between the trade between the Mesopotamian civilizations and the IVC or the Meluhas, Dilmun and Makan. Very specific favorite question of that of the UPSC. This small part, this is Nile Valley civilization or Egyptian civilization. Egypt, Mesopotamia man rakhe, Egypt, Mesopotamia, Indus Valley civilization, Chinese civilization. जदि आउ टिके आगु को हमें बढ़िबा then now see this एटा होची हमर इंडस वैली सिविलाइजेशन. एटा होची चाइनीज वांग हो वैली. मु काली कहितली व्हाई रिवर वैली सिविलाइजेशन राइट. दैट इवन कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन. दिस इज वांग हो वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन. एटा होची हमरटा इंडस वैली सिविलाइजेशन. ए जो ब्लूटा अछि एटा होची मेसोपोटामियन. एटा जो अछि एटा होची इजिप्शियन सिविलाइजेशन. जो ब्लूटा देखा होची सेटा होची रोमन सिविलाइजेशन पर करिया दबो. तो एबे पई मन रखा. ए जो ग्रीन देखा होची एटा होची ग्रीक सिविलाइजेशन. ए जो ग्रीन एटा होची ग्रीक सिविलाइजेशन. एटी ग्रीस अछि. द ग्रीक आइलैंड्स वर्ल्ड मैप पे देखा जीवो. एटा होची इनकास. एटा होची आजटेक. एटा होची माया. ए तीनटा नाम मन रखा. मु आगरे वर्ल्ड हिस्ट्री रे ए तीनटा का हमर काम दबो तनो के मु तुमको एबे देखै देली. इनकास सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका रो सेंट्रल अमेरिका रो होची कि मायाज एंड आजटेक्स. हम सारे की थिले
एमान थिले ना हां याकर बेसी खास रेकॉर्ड हम पाखरे नाही कोन पई कि नाही वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास रे हमें कहिबू as of now leave it. This is Indus Valley Civilization. आखि बंद कले तते एई मैप टा देखा जिवार अछि. This is Mohenjo Valley Civilization or China, Mesopotamia, Egypt, Rome, Greece. Again I repeat, Mesopotamians को संकर मेलुहा संगरे ट्रेड एंड कॉमर्स थिला. मेसोपोटामियन रेकॉर्ड रु जणा पड़छि एठी होछि ओमान, एठी होछि यूएई, एठी होछि बहरेन. एई जगह पॉइंट रा इंटरमीडिएट थिला. With this concepts, we will enter our prelims questions. ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ କରିବା. This much is clear? Yes, sir. Okay. Let's come to the topic. See, I am not teaching from slides. Teaching from slides is a nonsense. मु खाली कहिबी गुडा जिंस तू क्लास रे मन रखी जीवु आउ तते पढिया को पडियो आरएस शर्मा 11th class old NCERT. There is no other option. Political organization of that of the Indus Valley Civilization. Political organization of Indus Valley Civilization. Political organization माने कोन? Political organization माने होची एया कि तमे तमरो गवर्नेंस सिस्टम टा केमि चलची. Think practically. If ताकर स्क्रिप्ट डिसाइफर हेनी आमे एक्सकावेशन करी कि जिंस जानूचु अनलेस एंड अनटिल हम पर किछि एविडेंस आछि एरा प्रीलिम्स रो पार्ट अनलेस एंड अनटिल हम पर किछि एविडेंस आछि सेटा बन जाय कि आमे किछि ओपनली क्लेम करि परिबु नी. Thus we do not have any no clear idea of political organization. Clear होला? देख राइस हस्क रो एविडेंस मिलला कुकुर बिले कर पॉज रो चिन्ह मिल गला. जयप्रकाश ऑफ योर कैमरा. जय भावे हमको सील्स मिल जाउची राइस हस्क रो एविडेंस मिल जाउची पूरा शहर मिल जाउची किंतु हमको कोठी गोटे टेंपल टाइप रो स्ट्रक्चर मिललानी. आइडल वर्शिप थिला ना हां मदर गॉडेसेस को मूर्ति मिलिची पशुपतिनाथ को मूर्ति मिलिची किंतु हम कोठी टेंपल टाइप रो स्ट्रक्चर किछि देखा गलानी. तापरे आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस माने इना ताकर थ्योरी दोचंदी. द थ्योरी गोज लाइक दिस. बुझी पाछु तो प्रीलिम्स मेंस हां तापर हमने थ्योरी दोचंदी एई बेसिक कांसेप्ट न थिबारु प्रीलिम्स कोन होची ना क्लियर होनी. तमे जिंस गरा को एब्सोल्युटली नहीं जाउछो. इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट. टेंपल मिलिलानी तापर से मैंने थ्योरी देले अच्छा टेंपल नहीं ना सो देयर इज नो रिलीजियस स्ट्रक्चर एज सच एक्सेप्ट द ग्रेट बाथ. Understand the terms. Thus priestly class might not have ruled the place. Understand the statements. मंदिर मिललानी सबु मिल जाउची मंदिर मिलुनी ता माने होई थाई पारे कि प्रिस्टली क्लास रूल करू नथिबे. बुझेला? हेंस जेहेतु तापर कोन कहउचंदी ना नेक्स्ट थ्योरी दोचंदी ए माने याकर इंटरनेशनल ट्रेड होउची माने अदर सिविलाइजेशंस को संगे ट्रेड होउची माने दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स थ्योरी. Thus it could be a possibility that it was being ruled by a class of merchants. माने स्पेसिफिक किंगहुड कथा से कहूनी हेई थई पारे कि गोटे क्लास ऑफ मर्चेंट्स को रूल करथिबो. तार बेसिस कोन कहले तार बेसिस होची बोट मिलची रेकॉर्ड्स मिलची प्रीलिम्स मेसोपोटामियन रेकॉर्ड्स मिलची आ कोन ना सील्स मिलची एंड अदर फैक्टर्स. दस एंड कोन मन पकाओ सिटाडेल अछि मन पड़ची क्लास डिफरेंस अछि सिटाडेल अछि तापर खाली रिच क्लास लोक ही रही पड़थिबे. दस a class of merchant could be ruling in the Indus Valley Civilization. Temple nahi thus priestly class पूजा करू नथिबो से kings administrations ministers रो किछि एविडेंस पाइलेनी से तापर किछि कहिलेनी किबा
कंक्लूजन को आसिलेनी टिल्टिंग कंक्लूजन होची एब्सोल्यूट कंक्लूजन नुह टिल्टिंग कंक्लूजन होची मर्चेंट क्लास रूल करूथाई पारे बुझिलु ना रिपीट करिवि कह सर आउथर डी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन माने ठीक है सुनिबा प्रीलिम्स अटकुची एथि पैकी यूपीएससी रो वेरी बेसिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन माने तू केमिति रूल करचु को माने ता भितरे सिस्टम ता केमि चलची एक्सकावेशन में होची प्रथम पॉइंट आमे एविडेंस पाउचु एक्सकावेशन रो सेकंड पॉइंट यांकर स्क्रिप्ट डिसाइफर हेइनी प्रकृतरे कौन जिनस अच्छी क्लियर नहीं नेक्स्ट तापर पॉइंट कौन आमको किसी भी टेम्पल स्ट्रक्चर मिललानी जेतु टेम्पल स्ट्रक्चर मिललानी सबु जिनस मिल जाउची एटलीस्ट जदि टेम्पल थांता ताले किछि तार एविडेंस मिली थांता लाइन गरा सुन जा जदि टेम्पल नहीं ताले प्रिस्टली क्लास नहीं ताहले होई थाई पारे कि प्रिस्टली क्लास रूल करूनी किंग्स मिनिस्टर्स ब्यूरोक्रेसी रो हम पारे किछि एविडेंस नहीं बट हम पाखे एविडेंस अच्छी कि इंटरनेशनल ट्रेड होउची सील्स मिलची आईवीसी सील्स गरा मेसोपोटामिया रे मिलची मेसोपोटामियन रेकॉर्ड्स रे कुहाइची कि ट्रेड होउची बोली सिटाडेल अछि गोटे क्लास डिफरेंस अछि सबु जिन मन कि जाउथा तेणु करी हेई थे पारे कि माने ट्रेड एंड कॉमर्स बेसी करूचंती thus possibly it was ruled by a class of merchants absolute statement no बुझेला I will repeat once more don't worry बुझी हला ना बुझेला नहीं yes sir श्वेता पद्मा बुझेला Yes, sir. anyone want this to be repeated ये पार्ट रे पिला कोन पे भूल करंते आई डू नॉट नो किंतु भूल करंते कंक्लूजन कोन कोन सी कंक्लूजन हम पाखे एब्सोल्यूट नहीं प्रथम कथा प्रिस्टली क्लास रूल करू न थाई पारे मर्चेंट क्लास रूल करियर स्कोप बेसी अछि किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी किछि एविडेंस नहीं वी डू नॉट नो religious practice this much is clear Yes, sir. Next is religious practice see I will before going to religious practice let's make a base of it now tell me जो मनकर क्लास हेची जो मन हेइनी tell me what is masculine and what is feminine masculine कोन feminine कोन see I cannot see you you just need to speak out what is masculine so feminine re jota it will give birth or the creation okay masculine mane sustenance okay then okay koyo Sir, patriarchal society and matriarchal society. yes masculine and feminine ठीक है सुनिबा masculine and feminine means characters attributes traits गुण
The feminine attributes are this. Agugu bujhebini au. The feminine attributes are this: loving, caring, compassion, accommodating. The masculine aspects are aggression, protection, possessiveness, fighting, war. Your mother can give you a tight slap. It is the masculine aspect of your mother. Your father can also be loving. It is the feminine aspect of your father. Mostly women are dominated by feminine aspect. Does not means feminine, does not means women. Those loving compassion qualities are called as feminine aspects of any life. For a life to nurture, you need to have those feminine aspects. ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, you need to care of him or her. ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବୁ, ତାକୁ କେୟାର କରିବୁ, କମ୍ପାସନ ଦବୁ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟା ବଡ଼ ହେଇକି सोसाइटी ए दुनिया ଚାଲିବ. Thus, motherhood is a divine concept. Feminine and masculine are the characters only. सोसाइटी को बंचिया ପାଇଁ कि फेमिनाइन एस्पेक्ट दरकार है. वार हे जो जतले सोसाइटी रे मस्कुलिन एस्पेक्ट बढ़ी जाउची, जोटा कि ने बढ़ीची बोली क्राइम बढ़ीची सोसाइटी भीतर. It is not about men and women. It is about those aspects of life. Thus, now Indus Valley Civilization were aware of this. They have considered motherhood or feminine aspect almost everywhere in that society. Numerous religious practices or faith practices. Thus, numerous terracotta figurine of women has been found. They were aware of the factor that society can be sustained. The peace can be maintained when the society will go through the feminine aspects. Okay. Just wait. Just wait. Thus, a society can only sustain through the feminine aspects. The over dominancy of the masculine aspects will lead to war, First World War, Second World War, and the cutthroatings, religious hatredness, and others. Everything will more or less will be treated as mother. Thus, they were aware. See, it's a settled life. Thus, feminine or motherhood को religious aspects रे fatherhood भी अच्छी, but more or less most of the idols that we found was of mother goddesses or have treated other factors as mother. I'm talking of Indus Valley Civilization. Terracotta figurines of women were been found. Now you are getting why they were very much concerned about this. ता माने semane motherhood or feminine aspect ro significance कोन civilization पे ताकु से जानी थिले. Prelims question. Do not say that I मु एटा को आगुरु पढ़िनी. The moment we are finding terracotta multiple figurine of the women, they were aware of the feminine aspects of the society. Even what a plant is sown, but a plant is sown growing out of the embryo of a woman. Getting probably say that probably kon hoitho na goddesses earth. Now they were treating earth as mother or goddesses. As mother is capable or a woman is capable of or creating a child. Similarly, Mother Earth is also giving us food out of her embryo. Thus, Earth was being treated as mother. The similar Earth as mother is also a part of India's daily life. Thus, it gives a proof that the civilization still continues till today. Indus Valley Civilization जो ethos and ethics थिला सेटा आज भी हमर पाखरे अछि. From where now this is one of the evidence of it. Hence, Earth is called as goddesses of fertility or fertility goddesses. We are the only, now remember, we are the only civilization of this planet who worship women as goddesses, who worship women's
fertility as divine. Till today, rest of the civilization, the present day so-called India, is the only civilization which worships women fertility as divine. Rest of the world says women fertility as a pollution and other things that are agu world history class re ame kariya. As of now, leave it. Right? Odisha re gote achi celebration, Raja celebration. We worship the menstrual cycles of the women, and there is a temple in Assam, Kamakhya. We worship the genital parts of the women. Only civilization to do this. Clear? This shows the ethos of the IVC is still sustaining in today's world. But saying this, we are not very much sure that, by saying this, we are not very much sure that Indus Valley Civilization wala matriarchal society thile na nahi, like that of the Egyptians. आमे श्योर ना हूं, आमे श्योर एथिପାଇଁ ना हूं कारण तार स्क्रिप्चर टा डिसाइफर हेई पारेनी पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्चर टा. This much is clear? Yes, sir. See, class रे तोते कंटीन्यूअस स्ट्रेस देकी सुने को पड़ियो. We are not taking SSC banking class कि आसिली फैक्ट कहि देली स्लाइड देखि देली मु गली तू सब जिंस सुनिबू प्रोसेस करके रखी याको रखिबू मेंस खातारे बाहरियार अछि. By saying this, it does not mean that they have neglected the masculine aspect. They have taken care of that also, because any society to survive, the protection and possessiveness is equally needed. Thus, male deities are also been seen. Mostly, mother goddesses been seen. Everything been shown as mother. Agreed, but male deity bhi thila setare. For that, now if I share my screen and I'll show you, let me download and show it to you. Hopefully you can see. If I come here, show you Pasupati Mahadev. See, this is the true one. Eta bhangi dechi, eta heichi kon reconstructed. Okay. अरे पड़े वाला. We can zoom. Hopefully you can see it from here, right? देखे. What is out there? Oh. सर सेठी जूम कर दियो सेटा खोली हबनी सेमती खोलुला बेने सर मैं खोलिले क्लियर आसीबनी आपण सेठी डायरेक्ट जूम कर दियंतु. See, if you can see, right? Hopefully you can see it over here. Next time we'll download it. See, it is there. Now you need to see this preliminary question. UPSC, what they will do to लक्ष्य बही पढ़ी जा, they do not care. तू ए फोटोटा को देखिबू, एनालिसिस करिबू, देखिबू अच्छा योगी. Now this man याकू कहला कोन ना पशुपति महादेव. पशुपति महादेव एतने कहला ताको चारिपट देखे कि अछन ना पशु रा अछन. Hence he is being called as the lord of the animals. प्रथम कथा. तापर कोन देखिबू बही तो लिखाई छी एलिफेंट अछि ना हां, टाइगर अछि ना हां, गेटिंग बफलो अछि ना हां, डियर अछन ना हां. Apart from the things that are being written in your book,
What if you are giving UPSC तू ये फोटोटा को जूम करके देखिकी एनालिसिस करके जीवु याकर देखे एठी गोडटा जो गोडटा अछि सेटा एमिति पेज टिक अछि इट्स ए योगिक पोस्चर that means probably yoga was there we are not very much sure about it I hope you are getting ତାଙ୍କର ଗୋଡଟା ଦେଖିବୁ next time I will download and then I will show ଗୋଡ जो सेठी बसचंदी पशुपति महादेव पशुपति एथि पे कहउची ताकर चारिपटे कोन छ ना एनिमल्स अछन फर्स्ट पॉइंट आ को एनिमल्स अछन यू नीड टू रिमेंबर दैट आल्सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट एलिफेंट अछि टाइगर अछि बफेलो अछि हला अपार्ट फ्रॉम दैट सोटे कैप पिंजनी में हॉर्न अछि ताकर द न्यूज रे कोन थिला ताको गोडो जो अछि ता गोटा एमिति लागि अछि ताकर फीट जोड़ाबा so that is basically a yogic posture now yoga will come later in the time but now a new concept will come जदि योगा पर आसीबो किंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन रे योगिक पोस्चर रे से जो डेट अछन से बसचंती प्रोबेबली योगा कुड हैव प्रीडेटेड इट्स ट्रू एज बुझी पाला के किछि Yes, sir. तेणु करी योगा प्रकृत रे पर आसीबो सेमिति भी नुह ता माने होचे या more or less the history given by the British to us could be false or their limitation of knowledge hence a new history could be find out from this जेमती आज क्लास रे किबा काली क्लास रे कहबी Aryan invasion theory is a false theory माने कोन हमें करिया देखो now Aryan invasion theory is also being given to us by that of the British clear la hence but we are not going in that detail it is not an optional class thus let's come to the religious practice you know the significance of masculine you know the significance of feminine now you know most of the religious practices of that of the Indus Valley Civilization was feminine dominated now you know why the fertility goddesses was there and that of the terracotta figurine of the women have been found first point second point they have equally taken care of the masculine aspect ठीक है सुनिबो they have equally taken care of the masculine aspect male deity also been found the most famous male deity was that of the Pashupati Mahadev apart from this Shivalinga is the male sexual organ it's a phallus Shivalinga is not only the male sexual organ also it is the conjugal scene of a male and a female getting hence we even worshipping from the day one from a very ancient time what not the sexuality will become a pornography when the Britishers or the whites will come into picture they got a short they got a very narrow thought process we'll do that at the time of world history other than it India even today the Shivalinga is being worshipped jagara ebe aschi I think tomorrow right every one of us will flung to that of the Shiva temple what exactly it is it represents sexuality it represents divine creation hence without that no life is a possibility that is what the truth is all about that truth was being accepted by as early as by that of the Indus Valley Civilization people we worship sexuality ethics class tame gote jinso karibo that is called as Victorian ethics you will find see तम मानकरे घरे ड्राइंग रूम थिबो ड्राइंग रूम में देखिबो गोटे थिबो टी पॉट टाइप रो गोटे टेबल टे आ समस्त को घरे टी पॉट टेबल ऊपर पड़थिबोटा क्लॉथ now can anyone of you say me why we put a cloth on the tea pot table or any table can you say me हमें टी पॉट ऊपर कोनाटे काई पकाऊ most of you will say कि sir भल देखा जीवो this that and all Victorian ethics was something different those days think of their thought process I do not know how it is Victorian ethics says this जो तमे गोटे टेबल टे थोइछ चेयर टे थोइछ व्हाटएवर माइट बी
तार गोड़ोरा देखाउची लेग्स रा देखाउची they are saying those legs are naked women legs ता माने कोन गॉड नोस hence माने से माने टेबल रे भी न्यूडिटी कोन होतले देख परथले hence they were trying to hide this is the true essence of patriarchy but India was a different ball game altogether those people when they will come and will rule us and will become their slaves now our divine concepts will become pornography clear getting what I'm saying ethics class re besi bhal re abo getting Yes, sir. thus we have a different what na concepts altogether तमे बुझिलो मस्कुलिन कोन तमे बुझिलो फेमिनाइन कोन मेल डेटर सिग्निफिकेंस कोन फीमेल डेटर सिग्निफिकेंस कोन फैलस वर्शिप कोन ऋग्वेद कहूची ऋग्वेद स्पीक्स नॉन आर्यन पीपल ता माने कोन विल डू नॉन आर्यन पीपल वेर फैलस वर्शिपर शिवलिंग पूजा से माने करूथले देन व्हाट they also worship trees देख से जिंस को पूजा करा हबो जो जिनसर सिग्निफिकेंस हम लाइफ रे अछि आजि का डेट रे भी हम घर मान करे तुलसी गछ रहूची वृंदावती मां को नारे पीपल ट्री हो किसी बर गछ हो कि ओस्त गछ हो हमें ताकू आज भी पूजा ही करूचे बिकॉज़ इट हैज गॉट ए सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ लेट इट बी बुल आज भी महादेव का मंदिर रे नंदी बसुची we pay respect to cows and the bulls so humped bulls were there all those trees which were being worshipped as divine is also being worshipped today हमें आज भी कोन करछु ना कोन पिनछु ना ताबीज पिंदुछु डेउरिया क्लियर से माने अगुरु भी कोन करले ना amulets they were wearing thus could be a possibility they were believing in the evil spirits बुझेला Yes, sir. Harappan script next point Harappan script we have already talked Harappan script decipher हेनी तेणु करी सेमानकर contribution to literature or any other aspects we do not know thus as we do not know we cannot comment anything on that decipher हेनी तमाने यूज करछना नै मु जाननी मु जतले मु पिलाट थिली सेतबेले आठना चालू थिला मु बहुत पिला थिली सेतबेले चारना भी चलतला तमना टाइम रे चल नथिबो सो यू डू नॉट नो व्हाट इज आठना एंड व्हाट इज चारना मोस्टली और यू माइट बी नोइंग वी हैव जंप टू द सेकंड टॉपिक चारी अणा 16 टा अणा हेले टंका देउतला चारी अणा माने 1/4 हेला माने एटा 25 पैसा हेला 8 अणा माने 50 पैसा हेला so weights and measures and money till very recently even today is in the multiple of 16 is in the multiple of 16 जोड़े 8 अणा हेले टंका दाओ thus this multiple of 16s was as old as Indus Valley Civilization. Can you believe how old people we could be? When the world was barbaric, we had a civilization. When Western world's forefathers were in caves and they do not know how to wear clothes, we had cities. But these people came and ruled us, enslaved us to make us beggars. Are you getting what I'm saying? Multiple of 16s. आज जाएंगे चलथिला कोठी ना मॉडर्न इंडिपेंडेंट इंडिया रे वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वंस अगेन सो 16 64 160 320 640 ए टाइप रो वेट्स एंड मेजर्स इंडिया रे चलथिला बुझला नेक्स्ट पॉटरी रो सिग्निफिकेंस काली क्लास रे तुमको कुहाई छी पॉट रिप्रेजेंट सरप्लसनेस यूज ऑफ पॉटर्स वेल इमेजेस बनौथले ना हां कोथरे ना मेटल रे now listen last point before we wind up this topic now there is something called as make running notes when I'm taking classes there is something called as lost hadi wax mahama technique lost wax technique
what this lost wax technique is this. Metal ro mu gote मूर्ति बनेबी metal टा जेतले molten हे कि थिबो सेटा गरम हे कि अछि. Understand the lines, remember it here. My aim is to make a मूर्ति. जेतले मु गोटे मूर्ति बनेबी मेटल टा गरम हे कि अछि तनु कर मु ताको शेप दे परिबिनी कारण मोर हाथ जळ जियो. Then what to do? ताले मु गोटे छांचटे बनेबी बुझेला. मोल्ड गोटे बनेबी. मोल्ड केमती बनेबी मोल्ड टा बेसिकली बनाबो माटी रो ना माटी रो मोल्ड टा केमती बनेबी ती कोन करले. What they first did, they did this. See, nebe wax moham. Do not think the petroleum product works. Wax माने beehives अछि. Beehives महू महुमाछी पर जो ये छजाटा सेठू से माने wax नौथिबे सेथरे गोटे मूर्ति बनैले कोथरे ना wax से wax मूर्ति ऊपर से माने क्ले लगै देले माटी लगै देले तळे गोटे होल रखिले आ ताकू से नेकी सुखै देले सुखी होला सेटा तापरे से जो ताकू कोन कले ना नेकी जळै देले wax तक भीतर जो थिला सेटा तरली की होल पटे बाहरी गला ताले हम गोटे मोल्ड पळे आसिला मोल्टेन मेटल नेले से होल पटे से माने की पुरै देले मोल्टेन मेटल नेले से होल पटे ने की पुरैले हेंस तापर सेटा देले सेटा जतले कल सुखी गला ताकू भांगी देले हेंस विल गेट अ image. Getting what I'm saying? This is lost wax technique. Eti bujhela? Yes, sir. I repeat. Listen to me once again. Lost wax technique. You need to have a mold. छांचो दरकार ना. Mold बने टेक्निक होची एमतिया. wax आगर नेले मूर्ति गोटे बनेले मदर गॉडेसेस कर गोटे मूर्ति बनै देले हैला ता ऊपर से माने की क्ले लगै देले माटी लगै देले तब सुखै देले माटीटा मूर्ति ऊपर सुखी की मूर्ति रो शेप नै गेले तळे गोटे से माने होल रखथिले तापर ताकू नै की जळै देले माटीटा बेसी टाणी जीव ना wax तक तळली की से होल पटे बाहरी गला से जो होल पटे बाहरी गला भीतरटा फंपाई गला से ता भीतर मोल्टेन मेटल ता भीतर कोन करले ना ढाल देले ग्रेजुअली सेटा ठंडा हो गला से मोल्ड रो शेपटा नै गला ऊपर जो माटी ताको मन कोन करले भांगी देले जो मूर्ति बनाइथला ताको पॉलिश करके साइन कर देले दिस वाज कॉल्ड एज लॉस्ट wax माने wax टा हजी गला कारण गरम कला पर सेटा बाहरी गला लॉस्ट wax टेक्निक या कोई गुण मेटल इमेज भी बनाते से माने बुझला you know the significance of pottery now you know they were aware of bronze is an alloy they were aware of alloy making of metals so they were aware of metallurgy they have surplus they have weights and measures in number of 16s Harappan script not deciphered everything being worshipped which has got a significance in life like plants trees animals humped bulls tabiz bhi thila phallus worship shivalinga worship hotila they were aware of the feminine and masculine aspects they will know the significance of feminine aspect for the society for the short movement of the society most of the murtis are found that of mother goddesses they treat the earth as mother political organization is not clear probably being ruled by a class of merchants no evidence of temple bureaucracy king we do not know every statement getting clear Yes, sir. Yes, sir.
political organization. Getting? Now you know the significance of that town planning. You are aware of the fact citadel, class division. Getting? Others reply. Citadel, class division. Getting? Yes, sir. Roads cutting in right angles, like that of the Bhubaneswar, if not Katak, like that of the Bhubaneswar. Great bath significance. ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ bathroom ଅଛି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କମ ମିଳୁଛି ନା great bath ମିଳୁଛି ritualistic purpose ଯୋଗୁ ଏଟା ମାନେ ହେଇଥିବ granary ର କଣ ଅଛି significance ଅଛି all these things have been done we are just simply repeating it drainage system ର significance ଅଛି and six cities are there all things getting clear स्वयं संपन्न things clear बुझे है ना नहीं Yes, sir, बुझे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का सी ए पूरा टॉपिक रे एति की बुझिया थिला एथरे तमरा एग्जाम क्लियर हो ना ना हबनी नोट से दिला हो ना ना या परठू तमरा प्रिपरेशन स्टार्ट हो दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन एइना कोन करिवो ना आरे सना पडियो नॉट अ सिंगल थिंग लेफ्ट ऑफ दिस प्लैनेट व्हिच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग नाउ आरे शर्मा पढिबु घटना चक्र is a book which you need to get घटना चक्र MCQs लगेगो mains question answer लिखिबु and simultaneously तीनटा को करिबु next year your name will be in the selected list and need to do this for 12 13 14 months 10-12 मास एमती काम करिबु तो क्लियर करिबु not a single thing I have left which needs your understanding for the end of the civilization amara ine kala na sarla kemti sarla we do not know kintu sari chi boli ame jani chu between 2500 BC to 1750 BC Harappan culture existed कौन हैला मता विदेशी थिला तापरे 250 वर्ष कौन हैला हमें जानिनु हिस्ट्री क्लियर नै कारण हम पाखरे एविडेंस नाही जेहेतु हम पर एविडेंस नाही कौन हेची से हिस्टोरियंस आर सेइंग दिस नाउ देयर वाज अ वेरी फ्लरिशिंग सिटीज और सिविलाइजेशंस तापरे 250 इयर्स कौन हेची हमें जानिनु तापरे इमीडिएटली कौन गोटे स्टार्ट हैला पूछरु ना स्क्रैच रु नोमैडिक ट्राइब्स पुनथल माने असले बरी माने सिटीज रु गां फा छाडे की not even settled life asila that is called as Rigvedic phase we will do it in the next class ता मझिरे कोन हेची हमें जानिनु कोन ना पर किछि एविडेंस नाही जदी एविडेंस नाही ताले थियोरीज आसीबो ताले कोन हेथै पारे ना ए हेथै पारे सी right to understand on that this is a what which concept geography concept deserts moves forward loess माने डेजर्ट्स रो फाइन पार्टिकल सैंड्स गरा से पवन ने आगु को उड़ंती सेंति उड़े की हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स आगे जाय कि से खबर ना पड़ियो से ग्रेजुअली एमति उड़ी की पड़ी से जोठी जाय कि पड़ियो फर्टाइल लैंड रे से फर्टाइल लैंड रो फर्टिलिटी को कमी दो आई रिपीट डेजर्ट loess fine sands can fly for a longer distance as far as 100-200 kilometers far एमती धीरे धीरे एक जाकी पड़ी की गोटे फर्टाइल सॉइल ऊपर पड़ी से तार फर्टिलिटी को कमी देकी ताकू भी डेजर्ट बनै दबो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स और वॉकिंग ऑफ डेजर्ट्स और मूविंग ऑफ डेजर्ट्स thus इंडस वैली से पाकिस्तान जोन रो तू जदी टिके वेस्ट आडू जिबू तो गोटे डेजर्ट जोन नहीं पसिबू तेणु करी प्रोबेबली डेजर्ट हैज मूव्ड अहेड and has eaten up the fertility of the land thus
In that sense, because of the less fertility of that land, the civilization has collapsed. This is one of the thought process of the end of the civilization. First point is clear? Yes, sir. Expansion of the desert. Second কথা বলছেন, few of the people are saying no, that could not be a possibility. Now what? Now there is another geographic concept named as plate tectonics. Plate tectonics in geography class you will do. As the that is lithosphere. ता तळे गोटे एमती अर्थ गोलियाटा ता तळे गोटे अछि दैट इज कॉल्ड एज asthenosphere, semi solid plastic or semi liquid. Lithosphere is floating on the asthenosphere. तमरा एटा ज्योग्राफी क्लास रे हो प्लेट्स वरा मूव करछि, प्लेट्स माने क्रॉस टोटल लिथोस्फियर गोटे पार्ट से वरा से माने भांगी के अछंदी जोडे प्लेट जतले माड होछि जोटा बेसी डेंस सेटा तळु को पळौछि आ गोटे ऊपर को उठी होछि. This is called as plate movement. तेणुकर एमाने कहउचंदी हेई थेई पारे because of plate tectonics. Sudden subsidence माने तळु पळैछि और upliftment of land जोगु फ्लड पळे आसी सेठी पानी थिबो तो तेणुकर फ्लड पळे पानी तो थिबो ना इंडस का. Sudden subsidence of plate और upliftment of plate जोगु बहुत बन्या टाइप रो आछि भरी तेणुकरी से कौन है because of sudden subsidence and upliftment of the plates, flood has occurred that has led to the end of the civilization. This is second theory. Both of the theories done. What I कहूची moving of the deserts has led to the end of the fertility or increasing salinity. Hence, this has led to the decline of IVC. First point, we are not very much sure about it. Second point, they went to plate tectonics. Sudden upliftment or subsidence of the plates or land has led to flood. Thus, there is an end of the civilization. Both of the things could be, could not be, but won't make much sense. Now British came. After asle British. Now British karo what alaga thought process thila. Try to understand. British has never come here in your favor. We'll see there was something called as white race superiority. Even they do have today. Sei mane gote goppo nei astile. Se goppo na hochi it's a story, and the story name was Aryan invasion theory. Now the British will say because they have excavated this place. Now they will say, now why they will say Aryans will see later. किंतु एया कहिले से माने कोन माने एया कहले कि exotic tools माने specific tools weapons मिलिछ जोटा कि Indus Valley Civilization बालांकर नुह एमाने कहउछन या खाली सुनु था. There was a sign of insecurity and violence in the last phase of Mohenjo-Daro. semane कहउछंती Central Asians or very specifically Persians. Persia काई कहले मु आगु को बुझेबी एने खाली सुन था. Central Asians or very specifically Persians has entered from Persia through the northwest passes. I will show just listen. Through the northwest passes and entered the Indus Valley Civilization. semane asile edo bado civilization लोक मानको मारिले. Because of that numerous violence, the civilization ended. How fair that is, we do not know, nor we are arguing. I can give you 5 proofs that Aryan invasion theory is false, but I will not say. I will say it is true. Kahiki na history amar semti lekha haichi. The moment I will say Aryan invasion theory is false, rest of the ancient history will also become false. तार रिप्लेसमेंट कोन हम पाखरे नाही. प्रेजेंट गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट इंडिया तारा हिस्ट्री निजे खोजी नी. Thus we have no other option than to read whatever British has said to us. Thus the third point is it was destroyed by the Aryans. Aryans were the Persians. Persia माने पाकिस्तान तू क्रॉस करिवु तो ईरान ने पसिबु.
ईरान रु लोक आसिकी और पर्शियंस माने आसिकी तांको आर्यंस बोली कुहाउथला दे केम they invaded our place they killed all of us this is one of the theory why not the vice versa you cannot ask the question there are various counter questions that can be asked but you cannot ask because this is what your book says I have no other option than to say this the proofs that is been given na kona ना जो टूल्स करा आर्यंस करा सेठी थिला सेटा एठी मिलिछि बहुत मात्रा रे मिलिछि हेड्स एंड बोन्स कडल्ड हे कि गोटे जगह अछि प्रोबेबली से माने बोधे अटैक कर दे थिबे प्रोबेबली सो दिस इज वन ऑफ द थ्योरी आर्यन invasion theory will do it once again rather will do it multiple times just wait for the Hitler to come and others to come clear किंतु ताको पाखरे किछि एमती एविडेंस नाही which shows कि सेपडु बहुत लोक आसिले एपट क्राउड को ओवरवेलम करेगी समस्त मार दे पड़ले सेमती किछि एविडेंस नाही हां एटा हेइथे पारे जियोग्राफिकली से माने पाखा पाखी अछंती किछि किछि लोक ग्रेजुअली आसी थई पारंती किंतु सेथरे तमे एडो बड सिविलाइजेशन को मारी के सफा करि परिबोनी hence basically three theories or more theories are there first is expansion of the deserts second is plate tectonics third is destroyed by the Aryans all the three theories won't make sense because the same civilization the same culture also been seen today kali tame samaste Mahadev mandir jibo समस्त घरे तमर मोरलेस गोटे गोटे तुलसी गछ अछि we are still the nature worshippers we are still the deity worshippers we still love the mother goddesses the same civilization still continues Indus Valley civilizations रे women माने सिंदूर लगुतले आज भी लगुचंदी married women माने rest of the things we'll see later this was the whole concept of Indus Valley civilization apart from this not a single thing left where you need understanding not a single thing left rest of the things will be factual you might ask ki sir you have left one thing that is who sites re kon achi now there are various sites importantly there are 25 sites a site re a milchi Lothal re dock thila ethi hado milla seti se milla now those parts are factual parts just reading out slides in the class is an absolute wastage of time notes will एने factual part तमे सब निजे करियो बही पढिबो घटना चक्र लगेइबो टेस्ट पेपर लगेइबो फैक्चुअल पार्ट्स और नोट दिया जो तते ताको चुपचाप पढी आसी तापर मु तम टेस्ट नै अंडरस्टैंडिंग पार्ट you are standing on a national platform now no one can just come and talk to you on the basis of concepts whoever he or she them might be let even be selected candidates does not matter खाली क्लास रे बुझी दिवार अछि काली क्लास आज क्लास मिसे की इंडस वैली सिविलाइजेशन तू कहा गोटे धरि की बुझी दउ यस सर बिना नोट्स देखिबी ना सर एक्सटेंड मन अछि तो जम्मू मीरठ नर्मदा बलूचिस्तान मन पर लगी छी यस सर बस 250 sites 6 cities of significance मन पड़ला यस सर टाउन प्लानिंग रे सिटाडेल सिग्निफिकेंस को टाइप रो क्वेश्चन आसी परियो से थ्रू परफेक्ट यस सर रोड अरेंजमेंट कोन रोड्स कोन ग्रेट बात सिग्निफिकेंस कोन प्राइवेसी कोन पेपर 2 रे केमते लिंक होबो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रे केमती आसी परियो के पुट्टास्वामी केस रे भी हेले ताकू केमती तमे लिख परियो ग्रेनेडिक्स द सिग्निफिकेंस कोन सरप्लस माने कोन ब्रिक्स रे ड्राइड ब्रिक्स रो कोन सिग्निफिकेंस बॉन्ड ब्रिक्स रो कोन सिग्निफिकेंस रिचुअल्स रो कोन काम ड्रेनेज रो कोन काम स्वच्छ भारत अभियान सहित सेटा केमती माने लिंक करी हबो एंड अदर स्कीम्स जो थे कि सैनिटेशन संगरे छी हाउ दैट कैन बी लिंक्ड एग्रीकल्चर केमती हे परिबो वुडन प्लाउ ताको पाखे नथिला
किंतु ग्रानरी थिला. Now one more theory will come into picture. सब मन पड़छि तो Yes, sir. जे मन पड़ुनी ताले सी काली बही पढ़ी के आसिनी. बही पढ़िनु you will pay the price in your prelims examination. Forget mains को जा ही परिबुनी. So what is being said, just blindly do it, you will write mains this time. Animals are significance, kona, technology craft, kona, copper, tin, Balochistan, Afghanistan, all the things been said to you. Just go and read your NCRT, that's it. Then come back tomorrow. Mesopotamian records, Meluha, Dilmun, mother goddesses, feminine, masculine, palace worship, trade, commerce, decline, 3 theories. Everything said. Eine Jibu and do your things. Now tell me, if you have any doubt, then ask me, or else tomorrow we'll start the most vital topic. I'll make a base for that of the society class. Ancient history Jahara week, Tara pura UPSC week. That too very specifically in that of the BJP government. Kali hame society class or base pakya. Later Vedic will very specifically say about caste and Varna system and the 4 Varna difference with in the caste and other details. Now tell me, if you have any doubt, then ask. Hopefully you have understood it, unless and until you read the book. Or else we'll leave. We'll see you tomorrow. 12 to 2. No issues, no issues. Kali class over. If you have any doubts, then ask. If you want notes, I'm saying you read R.S. Sharma. That's the best notes. Baharu question mostly asibani. Any doubts? No, sir. Next class. Tomorrow 12 to 2.